Hello my dear students, I welcome you all in your mathematics class. Today we are going to learn chapter 16 part 2. First of all we discuss some important notes. First of all we convert kilometer per hour to meter per second. As we know that 1 kilometer is equal to 1000 meters and 1 hour is equal to 60 minutes and 60 minutes is equal to 60 multiplied by 60 second and this is equal to 3600 second. So 1 kilometer per hour is equal to 1 kilometer per 1 hour. अब हम यहाँ पे 1 किलोमीटर की वैल्यू मीटर्स में एंड 1 आवर की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स अपॉन 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड. तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 0 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो 0 0 कैंसिल हो गया. सेम यहाँ पे सेकेंड 0 न्यूमरेटर में भी है एंड डिनोमिनेटर में भी है, सो 0 0 कैंसिल एंड वी गेट न्यू फ्रैक्शन 10 अपॉन 36 meter per second. Again, we observe that 2 is a common factor of 10 and 36. So, we divide numerator and denominator by 2. So, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन मिलेगा 5 and 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 18. So, we get 5 upon 18 meter per second. Therefore, 1 kilometer per hour is equal to 5 upon 18 meter per second. So, we can say that to convert kilometer per hour in meter per second, we multiply by 5 upon 80. Now we convert meter per second to kilometer per hour. As we know that 1 meter is equal to 1 upon 1000 kilometer and 1 second is equal to 1 upon 3600 hour. So 1 meter per second is equal to 1 meter upon 1 second. Now we put value of 1 meter and 1 second in this fraction. We get 1 upon 1000 divided by 1 upon 3600. And this is equal to 1 upon 1000 divided by 1 upon 3600 kilometer per hour. As we know that fraction is divided by another fraction, we multiply first fraction to the reciprocal of other fraction. So
1 upon 1000 multiplied by reciprocal of 1 upon 3600 means 3600 upon 1 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 0 0 डिनोमिनेटर में भी है एंड न्यूमरेटर में भी है, तो दोनों कैंसिल हो गया एंड वी गेट 1 upon 10 multiplied by 36 upon 1 kilometer per hour, and this is equal to 1 multiplied by 36 upon 10 multiplied by 1 kilometer per hour, and this is equal to 36 upon 10 kilometer per hour. But we observe that 2 is a common factor of 36 and 10. So दोनों को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें न्यू फ्रैक्शन मिलेगा 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। So 1 मीटर पर सेकेंड is equal to 18.5 किलोमीटर पर आवर। So we can say that to convert meter per second in kilometer per hour, we multiply by 18 upon 5. Now we start activity 2. Question number 1. Express in meter per second. A 60 meter per hour. As we know that 1 kilometer per hour is equal to 5 upon 18 meter per second. Therefore 60 kilometer per hour is equal to 60 multiplied by 5 upon 18 meter per second, and this is equal to 60 multiplied by 5 upon 18 meter per second. So 6 5s are 30 and we add 0 to right of the product upon 18 meter per second. This is an improper fraction, so we convert it into mixed fraction and we get answer 16 complete 2 upon 3 meter per second. Next, see 198 kilometer per hour. As we know that 1 kilometer per hour is equal to 5 upon 18 meter per second. Therefore 198 kilometer per hour is equal to 198 multiplied by 5 upon 18 meter per second. तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 18 1 सा 18 एंड 18 11 सा 198 मीन्स दोनों को हम 18 से डिवाइड करेंगे। सो 198 को 18 से डिवाइड करने से हमें क्वेश्चन मिलता है 11 एंड 18 को 18 से डिवाइड करने से क्वेश्चन मिलेगा 1। सो वी गेट 11 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 1 मीटर पर सेकेंड and this is equal to 11 multiplied by 5 upon 1 meter per second. So 55 meter per second. Next, E 36 kilometer per hour. As we know that 1 kilometer per hour is equal to 5 upon 18 meter per second. Therefore
36 kilometer per hour is equal to 36 multiplied by 5 upon 18 meter per second. But we know that 18 2s are 36. So हमने 36 को 18 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन मिला 2. So 2 multiplied by 5 meter per second and this is equal to 10 meter per second. Remaining sums of question number 1 you will do in your homework. Next, question number 2. Express in kilometer per hour. A 20 meter per second. As we know that 1 meter per second is equal to 18 upon 5 kilometer per hour. Therefore, 20 meter per second is equal to 20 multiplied by 18 upon 5 किलोमीटर पर आवर. हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 5 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 5. तो दोनों को हम 5 से डिवाइड करेंगे. 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 4 एंड 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 1. सो वी गेट आंसर 4 multiplied by 18 upon 1 kilometer per hour. So 4 multiplied by 18 kilometer per hour and this is equal to 72 kilometer per hour. Next, see 120 meter per second. As we know that 1 meter per second is equal to 18 upon 5 kilometer per hour. So 120 meter per second is equal to 120 multiplied by 18 upon 5 kilometer per hour. तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 120 एंड 5. तो दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे. 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 24 एंड 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 1. सो 24 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 1 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 18 kilometer per hour and product of 24 and 18 is equal to 432 kilometer per hour. Next, E 25 meter per second. As we know that 1 meter per second is equal to 18 upon 5 kilometer per hour. Therefore, 25 meter per second is equal to 25 multiplied by 18 upon 5 किलोमीटर पर आवर. तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 5. सो हम दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिलेगा 5 एंड यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिलेगा 1. सो 5 मल्टीप्लाई बाई 18 अपॉन 1 kilometer per hour and this is equal to 5 multiplied by 18 kilometer per hour. So 18 5s are 19 kilometer per hour. So remaining sums of question number 2 you will do in your homework. Now we solve question number 3. A truck travelled from Ajmer to Delhi covering a distance of 370 km in 5 hours. Find the speed of the truck in meter per second. That means truck 5 hour में 370 km डिस्टेंस कवर करता है तो हमें ट्रक की स्पीड फाइंड करनी है. So here given that distance covered
is equal to 370 kilometer and time taken is equal to 5 hours. Therefore, the speed of truck is equal to distance covered upon time taken. And this is equal to 370 kilometer upon 5 hours. On dividing 370 by 5, we get answer 74 kilometer per hour. Now we multiply it by 5 upon 18 to convert into meter per second. So, speed s is equal to 75 kilometer per hour is equal to 74 multiplied by 5 upon 18 meter per second. This is equal to 74 multiplied by 5 upon 18 meter per second. And this is equal to 370 upon 18 meter per second. On dividing 370 by 18, we get answer 20.5 meter per second. Thus, the speed of truck is 20.5 meter per second. Here we completed the activity 2 of chapter 6. Thank you one and all.